start the conversation, let us know first what a healthy state of mind is like, what a person with a healthy state of mind is like. Okay, so mental health is defined as a state of psychological, emotional, and social well-being, Okay. right? So if we look at these three things separately, आप internally, emotionally खुश हैं या satisfied हैं, settled हैं, उसके साथ साथ जो आपके विचार आ रहे हैं, जो आपकी thoughts आ रही हैं, so they are in tune with your emotions. Okay. So so you have a happy mind, so you have happy thoughts, right? Mm-hmm. And then also socially, so with your relations, आपके आसपास के लोग जिनसे आप मिलते हैं, your colleagues, your family members, partners, etc. So you feel uh, you know um, settled, and you feel connected to the things around you, Mm-hmm. and your life seems peaceful. So that is positive mental health. So that is, it's very difficult to say कि normal क्या है, especially when it comes to mental health. There is no standpoint, or there is no scale कि मेरे लिए खुशी बहुत अलग हो सकती है, आपके लिए खुशी बहुत अलग हो सकती है. But if you feel settled in these three domains, that is what we say is good mental health. So, Rishi, if we are to find out what are the first signs that would a person should know Mm-hmm. in order to know that their mental health might be affected Mm-hmm. or needs attention. Mm-hmm. So, are there any signs that the person has to look out for, that people can look out for? Yeah, so usually when people start having mental health issues, um, look, not every challenge is a mental health problem, right? Okay. बुरे दिन सबकी लाइफ में आते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग सबको लग सकता है, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वर्क प्लेस स्ट्रेसेस होते हैं, एंड दैट हैपेंस विद एवरीवन. सो जस्ट बिकॉज आप 2-3 दिन सही नहीं गए हैं डजंट मीन कि आप डिप्रेस्ड हो गए हो, या आपको एंग्जाइटी हो गई है, राइट? बट जो फर्स्ट चेंजेस यूजुअली देखे जाते हैं कि एक जो आपका जो मूड है वो एक सस्टेन्ड टाइम के लिए चेंज हो रहा है. मतलब Okay. आप कंटिन्यूअसली उदास महसूस कर रहे हैं, या आप कंटिन्यूअसली एंग्शियस, बेचैन महसूस कर रहे हैं, राइट? एंड इवन दो पॉजिटिव इवेंट्स आ रहे हैं, बट उनके इम्पैक्ट से जो आपको खुशी मिलनी चाहिए, या आपको जो रिएक्ट करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे. So it's a pervasive change. Pervasive means it is including in your daily life, and it is constant, right? So that is probably mostly the first sign of change when it comes to identifying mental health issues कि constantly problem है, right? The second thing is कि आपकी biological rhythm में change आ रहा है. So your sleep is getting affected, your appetite is getting affected, intimacy gets affected with people around you or your partners. So that is another sign कि something is not right. And then third is that you start experiencing dysfunction. So dysfunction in the sense कि आपका जो usual functioning का तरीका है, या जो आपका रूटीन है, आपका जो वर्क आउटपुट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए देखें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, राइट? सो दीज थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग, और आप भले ही एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, right? So these are some signs that we look out for that are very easy to identify as well. So that is when we say ki something is not right. So, is there a time period that you should look out for, that if something is going on for a particular time period, that means then you need Yeah. So attention or that's a something? very relevant question also, because just like I said कि 2-3 दिन बुरा लगा Hmm. तो डिप्रेशन है या नहीं है. So the the textbooks that we follow, Hmm. and जिन manuals या जिन guidelines की सहायता से psychiatrist या psychologist diagnosis बनाते हैं, हर disorder के लिए एक certain time frame होता है, Okay. right? So if we talk about depression, for example, so usually symptoms should be continuous and consistent for a period of minimum 2 weeks, Okay. right? That is for depression. Hmm. For anxiety disorders, this is different. Okay. Like कुछ disorders के लिए it can be 3 months, कुछ के लिए it can be 6 months, Okay. right? So the time frame changes based on the disorder, right? For psychotic disorders it can be very less, जरूरी नहीं है कि इतना लंबा हो. कुछ Mm-hmm. मतलब कुछ symptoms अगर एक हफ्ते में भी आ रहे हैं तो वो भी एक disorder है, but depends, the presentation depends. But if you talk about depression, which is probably what people are most interested in knowing about, so I would say 2 weeks is the time frame. For anxiety it is usually a few months. Okay. So, Rishi, if I would ask you, what are the most commonly occurring mental health issues that Mm-hmm. people need to look out for? Mm-hmm. So, what would they be?
I mean, if you look at scientific data and if you look at research that's been done in India all over the world, so the most common issues are usually anxiety and depression, very closely related to each other. कुछ parts of the world में anxiety ज़्यादा common है, कुछ parts of the world में depression ज़्यादा common है, but these are the most common ones, right? Okay. उसके बाद अगर अपन देखें कि कितना फ्रीक्वेंसी किन डिसऑर्डर्स में ज़्यादा है, सो एडजस्टमेंट रिएक्शंस काफ़ी होते हैं, स्ट्रेस रिएक्शंस लोगों में काफ़ी पाए जाते हैं, विच आर बड़े इवेंट्स के बाद यू आर मेकिंग चेंजेस एंड दे प्रेजेंटिंग मेंटल हेल्थ सिनेरियोज में. देयर इज a certain subset of population jahan bipolarity is quite common. So you have phases of depression, mania, and so on. Psychotic disorders are also quite common. If you look at Indian data, for example, so they say that almost 0.8 to 1.2% of the population suffer from psychotic disorders. And that is a big number when you translate it population ke basis pe. So yeah, again, and all these are categories. So when I am saying anxiety, I'm not talking about one single thing. Anxiety के spectrum में 10 चीजें आती हैं, right? So जैसे OCD is also an anxiety disorder, right? Generalized anxiety is also an anxiety disorder. Phobic disorders are also anxiety disorders. Eating disorders are also anxiety. So when I'm saying anxiety, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, मैं एक particular चीज की बात नहीं कर रहा हूँ. Similarly, psychotic spectrum में भी बहुत सारे different types of चीजें आती हैं. So yeah, so but डेटा जब बनता है तो आप एक सेट के हिसाब से डेटा बनाते हो. Can you elaborate a little more on the psychotic disorders? What are they exactly? Because you said that it's more prevalent in India. Yeah. So not more prevalent in India per se, but quite common Okay. and goes unnoticed. Okay. क्योंकि अपना कल्चर, अपनी सेटिंग ऐसी है कि अपन बहुत चीजों को फेस वैल्यू पे नॉर्मल मानते हैं, right? So for example, if you're talking about psychotic disorders, right? So the hallmark of psychotic illness would be having delusions, and Okay. delusions are basically fixed firm ideas which are contrary to reality and cultural beliefs. So this is the definition, but what that Can you basically, give an exactly. So I'll example give to an example. say? So a very common delusion is delusion of persecution. So that is a person getting paranoid, right? कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, right? लोग मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं. एंड ऐसा आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एक ऐसे इंसान को देखा होगा जो जरूरत से ज्यादा पैरानॉइड है, या इतना ज्यादा उस आइडिया में कंज्यूम्ड है कि किसी और की बात नहीं मानेगा, rational thought नहीं समझेगा. So this is a very common presentation of a psychotic illness. Okay. कि you will have someone who is behaving very strangely, saying very odd things, right? And they're not ready to listen to reason, right? Because in their heads, this is the reality. मुझे पता है कोई मेरे पीछे पड़ा है, चाहे आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो. मूवीज में भी आपने कई मूवीज में इन चीजों पे बातें होती हैं. सो यू मस्ट हैव सीन इट इन मूवीज एंड शोज. So that is what usually psychotic disorders could present like. बहुत सिंपलिस्टिक नहीं है, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है, बट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत सारे होते हैं. कुछ कुछ कंडीशंस में बिहेवियरल चेंज ज्यादा होता है. पीपल डिस्प्ले वेरी ऑड, वेरी बिजार बिहेवियर्स विदाउट सेइंग मच, राइट? सो बहुत ज्यादा डर लगना, फॉर एग्जांपल चेक करना बार बार खिड़की दरवाजे, ये वो, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई कुछ. सो बिहेवियरली भी आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं. So, I mean, when you work with mental health patients, it is a bit easier to understand, I would say. But yeah, these are the common themes that are seen. Okay. So basically, anything that makes you makes your heart a little more pumping, a little extra. Is it? Can we put it like that? If I'm getting it right? Not really. So because there's a distinction between anxiety and when you talk about psychotic symptoms. Okay. जब आप घबरा रहे हो तब भी आप बेचैन हो, आपका धड़कन तेज हो रही है और आप घबरा रहे हो, राइट? बट साइकोटिक इलनेस इज डिफरेंट. उसमें ये डर की भावना बहुत स्ट्रांग Okay, होती the है. fear is very The strong. fear is very strong and it makes you do things which are not usually would be your pattern of behavior, right? कि मैं अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई आके मुझे मार देगा, right? Without any reason or logic.
So that Hmm. is what a psychotic symptom would look like. Anxiety में ऐसा नहीं होगा. Okay. Anxiety में कोई खुद को बंद नहीं कर लेगा, ऐसे नहीं डरेगा. वो एक अलग तरीके का वो है. presentation है. So yeah. With this, I have a question, Rishi. Can you explain a little more of the psychotic disorders that maybe the women must be facing and they don't realize? So according to the data that is there, psychotic illnesses are a bit more common in women, right? Okay. Usually they start earlier in life. So As what early as? so when I say early, I mean between the ages of 18 to 28, so Okay. that kind of 20 से 30 साल समझ लीजिए. But एक bimodal peak दिखता है. So bimodal means कि it is distributed across two specific age ranges. So जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 साल में एक तो occurrence होता है, दूसरा occurrence is between 40 to 50. Okay. So it's bimodal. So Okay. females can have these illnesses more commonly either 20 से 30 के बीच में या 40 से 50 के बीच में. Okay. यूजुअली जरूरी नहीं है कि बीच में नहीं हो सकती है, बट ये प्रेवलेंस ऐसा देखा गया है, राइट. और रही बात क्या चीजें हो सकती हैं इन विमेन, सो फॉर एग्जांपल पेरीपार्टम. सो पार्टम इज प्रेगनेंसी, राइट. सो पेरीपार्टम समय में, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के कुछ समय के बाद कई महिलाओं में साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, राइट. एंड अगर आप रूरल लेवल पे और इस पे देखेंगे तो बहुत बार ये चीजें नजरअंदाज हो जाती है, या जो अपन बोलते हैं हवा का चक्कर है. आप सुनते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि हम झड़वाने जा रहे हैं, हम डोरे बनवाने जा रहे हैं. वो यही है. इट इज somebody behaving so oddly कि ये लगता है कि इसको तो भूत चढ़ गया है. और जो अपन कहानियां सुनते हैं, जो दादियाँ नानियाँ सुनाती हैं कि अरे हमारे गांव में ऐसा हुआ था, हमारे नेबर को ऐसा हो गया था, फिर उसको इस कुएं का पानी पिला दिया, इस बाबा को दिखा दिया, ठीक हो गया. वो मतलब बेसिकली एट इट्स कोर दीज आर साइकोटिक इलनेसेस, व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. और कल्चरली ये है कि अरे ये तो किसी देवता का वो है, हमने पूजा नहीं करी, 5 साल पहले उन्होंने नारियल नहीं रखा था, व्हाटएवर. वो तो बातें बहुत बनती हैं, बट सो that's how they get overlooked. So peripartum is very common in women. उसके बाद usually during moments of stress in life, right? So कोई बड़ा event जब होता है, like losing a partner, for example, losing a parent, right? Sudden demise in the family कि unexpected हो, जब trauma बहुत लग रहा है, तो उस टाइम पे ये symptoms कई बार देखे जाते हैं. So yeah, मतलब and बाकी then other than that जो normal circumstantial चीजें हैं, like if everybody has a tendency for a mental illness, it is about वो कितने stress में manifest हो रही है, right? So जो अपन बोलते हैं ना कि चीजों का एक genetic linkage होता है, so everybody has a that propensity to develop an illness, but it is आपकी tenacity कितनी है, आपका how much is your resilience. exactly. So आपके resilience पे, आपके support systems कैसे हैं, आप आपकी family कितना ध्यान रखती है, दोस्त कैसे हैं, आप खुद के लिए क्या क्या कर रहे हो, are you exercising, are you eating right, so all these things, it's all about that immunity thing that we say na, well-being. So if you, that is why we say कि you should invest a lot of time, energy and effort into well-being, because that improves your resilience, that keeps you away from mental health issues, right? So yeah. With resilience, there's a big question that comes now because the kids are losing it nowadays. We see a drastic downfall of resilience in kids. Yeah. Can you elaborate more on it? What is going around and how bad can it get, or what exactly can be the effects? So Indian context में ये जो child upbringing का जो तरीका है, वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, राइट. जो ये पैराडाइम है ना कि व्हाट इज गुड चाइल्ड अपब्रिंगिंग, एक तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा बदला है इन पीपल, सोशल मीडिया है, थिंग्स लाइक दैट. दूसरी चीज़ ये है कि देर आर न्यूक्लियर फैमिलीज nowadays, right? So and also people are having children at a later stage in life.
पहले बच्चे कब होते थे जब आपके पेरेंट्स शायद 20 साल 22 साल Just 23 साल 24 ऐसे months. बिफोर 25. Now you're having children around the age of say closer to 30 almost. You're living in a nuclear family. कुछ चीज़ें जनरेशनली कल्चरली सिखाई जाती हैं, राइट, एंड वो इतने सालों से इसलिए चल रही है बिकॉज दे वर्क, Hmm. राइट, कि जो अपनी दादियाँ नानियाँ और उनके और पूर्वज जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं ना कि बच्चे के लिए ये करो वो करो ऐसे ध्यान रखो ये खिलाओ वो पिलाओ, यू नो, सो ये टाइम टेस्टेड तरीके हैं. टाइम टेस्टेड Mm-hmm. तरीके यूजुअली कभी गलत नहीं होते, Okay. राइट. सो बट अब क्या हो रहा है, अब आप नए नए चीज़ें देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो बच्चों को लेके, तो कि Hmm. उनकी फीलिंग्स के बारे में एकदम से बहुत कंसर्न आ बहुत गया है, ज्यादा तो आ जिस गया. वजह से बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड, यू नो, बहुत पैम्पर्ड, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इन अ वे कि यू नो छोटी छोटी चीज़ों को इलेबोरेट करके या एग्जैजरेट करके डील किया जा रहा है. सो उस वजह से रेजिलियंस पे बहुत शिफ्ट आया है. और अगर आप देखोगे सो ये जो चेंजेस हैं ये पिछले 5 से 7 साल में हुए हैं, Yes. इसलिए जो बच्चे अब आ रहे 7 8 साल 10 साल के हो रहे हैं उनमें ये दिख रहा है, Correct. right, Yes. because this is a trend that has changed from a longer time, which is Mm-hmm. why you're seeing it right now. And obviously तौर तरीके बदलते हैं, बदलने भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो बैलेंस नहीं आया है. The tradition, the culture has to Exactly, be so that maintained. it should be maintained, and I'm not saying that everything that used to be done is right. That is not what I mean. I believe in being progressive, right? But at the same time, a balance is very important, and you shouldn't be very impulsive or very jumpy to change methods, right? Hmm. Because at the end of the day, you know, you're kind of building a child's ego structure, you're building a child's mental makeup, right? So the kind of things that children imprint, right, that is very important from a get-go. So I mean, it's not easy for anyone, and it's very confusing. So which is why I always, you know, mention this to the parents who come to me, that you should take a step back, right, and try and be slow in your process. एकदम से चीजें बदलने की जरूरत नहीं है, right? तो थोड़ा सा सोच समझ के चीजें करना is always better. I think this would be a topic in itself It because is, there's it so is, it much is. to It talk actually about. is, yeah. So another thing I would want to would like you to put some light on is generational trauma. This again has taken limelight very recently. It is, So could yeah. you explain a little more on this? So, as the word says, generational trauma is trauma passing down through generations, Yes. right? Why does this happen, right? Usually, जब आपके प्रीवियस जनरेशन्स में नेगेटिव ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए रहते हैं, उससे आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, देयर लाइव्स आर शेप्ड बाय दिस ट्रॉमा, right? So let me give you an example. So say the Holocaust, right? We all know about what the Nazis did and everything like that. And Jewish people में कितना trauma था. Now, as the children and their children grew up, they grew up in this culture, in this mindset, right? तो आप ऐसी जगह पे बड़े हो रहे हो जहाँ पे इस ट्रॉमा का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आपने भले ही वो चीज़ सीधे ना देखी हो, it's like you're living it through their eyes, right? Okay. Because with the way they talk about it, like the way they act, the way their behavior has changed. And like I said, you know, children imprint. So आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे हुए, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, वो अपने तौर तरीकों को ऐसे बदलते हुए बड़े हुए, फिर यू नो नई जनरेशन आई, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ये करते देखा तो वो भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं. So things were तो normalized which were not normal. Exactly. मतलब they, you know, it's like carrying forward of maladaptive behaviors, right, practices, and that is one thing. The other thing is when people go through a very big traumatic event, it can alter things on a genetic level as well. Okay. So epigenetics talks about how stress can change DNA, right? And then these micro changes in the DNA get passed on from generation to generation. So like I said, na, everyone has a genetic propensity for illness. Similarly, ऐसे lineages में
ये प्रोपेंसिटी बढ़ गई बिकॉज वो ट्रॉमा ने एक सेलुलर लेवल पे चेंज क्रिएट किया है, Okay. right? So that is a second reason for generational trauma, right? And then the third reason is more about, you know, the um, the social expression that is seen in these families. So like their self-esteem is very different, right? The way they respond to things is very different. वही जो मैं बता रहा हूँ ना, बिहेवियर में जो चीजें आती हैं वही चीज बच्चे भी सीखते हैं. So that is how generational trauma gets carried forward, and the best way to deal with it is number one to recognize it, right? Because क्या है, आपको अपने स्पेस में तो वो चीज नॉर्मल लगती है जो आप कर रहे हो, बट अगेन व्हेन यू गेट एक्सपोज्ड, लाइक आई सेड, अब तो इतना एक्सपोजर है कि सबको सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है. सो then you know it takes one person to realize कि this is not right. You know, this kind of reaction that I have to things that my family also shares is not normal, you know. And then you break that cycle, then you heal, then you talk about it, then you know, kind of accept what has happened and learn to move on, right? So it is just how, you know, the traumatic process takes time, healing also takes time, right? So that is what generational trauma is. So how can a person who has realized that they need to break this chain of generational trauma can heal themselves? What are the tools? What are the helps available for them? I think the first thing is the awareness, right? Okay. Like I mentioned, you know, understanding why this has happened, and then coming to terms with it, accept that you are lacking. Okay. The acceptance has to the be acceptance has to come, right? first. Matlab you, for healing, the number one thing is acceptance. Okay. You know, कि I realize that my mental health is not right, because everybody tends to fight things initially, which is a Otherwise, good you'll thing. keep fighting Exactly, with the concept having itself. having a defense is very good. You know, आप खुद से लड़ते हो कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, I'll try, but then when you keep on failing, then you have to change your perspective. Here something is not right. So the first thing is acceptance, right? The second thing is, you know, talking to the right specialist when it comes to trauma. So you have psychiatrists, you have psychologists, आप therapy कराओ, counseling कराओ, shared experiences होते हैं. You know, you meet people who have shared similar experiences like you, and you talk to them. You know, you understand what they did to help themselves. Okay. मतलब वो जो insight मिलती है ना from somebody who has gone through the same problem, right? That really helps. So a community is something Community that really helps helps, you. which is why अगर you know आप बहुत सारे लोग हैं, like we spoke about the Holocaust, right? So Holocaust में कितने Jews affect हुए, right? तो कितनी बड़ी community है जो इस trauma से गुजर रही है, जो इसको heal करने की कोशिश कर रही है. आपस में बात करने से बहुत फायदा होता है. I also want to talk about how are the kids getting affected with the kind of content they are watching and with the increased screen time. I think every parent has the biggest struggle that they're facing is screen time. And how is it affecting their mental health? And what is like the appropriate time for time for screen for keeping their mental state healthy? And what kind of content should they watch? So if you look at the word of the year for 2024, it is brain rot. Okay? And brain rot is a very Gen Z term. Okay. It basically means जो आप ये unnecessary incessant scrolling करते हैं और पूरे टाइम फोन से चिपके हुए हैं, तो इससे कुछ गेन तो हो नहीं रहा है. So it's like, you know, you're rotting your brain. So that's why brain rot is a, you know, the word of the year for last year. And I completely agree with it. You know, matlab, I think first of all, not just for kids, for all of us in general, the amount of exposure we have to social media and uske jo effects hain, right, in our lives is massive, right? And subconsciously, you know, we find ourselves changing, expectations are changing, a sense of well-being is changing. The well-being is no longer just feeling peaceful and content. Well-being is now looking good on Instagram, or you know, others perceiving you to be of a certain level. Is it even the right thing to do? It's not right. That's what I'm saying. It's kind of you know, very slowly
changing The our lives, and definition we are entire is exactly changing changing. the definition. Exactly, very rightly said. So एंड बच्चों में अगेन बहुत ज़्यादा हो रहा है. अक्सर पेरेंट्स चुप करने के लिए, सुलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए स्क्रीन पकड़ा डिवाइसेस दे देते हैं. देते हैं, और बच्चे भी खुशी खुशी वही कर रहे हैं. देखेंगे. और कंपैरिजन बहुत है कि भाई स्कूल में वो कह रहा है कि यार मैं तो 2 घंटे मोबाइल पे गेम्स खेलता हूँ, आप कितनी देर खेलते हो. तो फिर वो घर आके बच्चा रोएगा, वो करेगा, जिद करेगा. I have had cases in my practice when I was at AIMS. So, lots of these children coming, and children are behaving so badly just to buy a new mobile phone. Okay. Right? कि मतलब बेचारे गरीब घर से माँ बाप परेशान आ रहे हैं कि बच्चा कह रहा है कि आप अपनी ज़मीन बेचो क्योंकि मुझे नया वाला Oh my God. इस ब्रांड का फ़ोन चाहिए. And how young are these And kids? 8 years old, 10 Oh years my God. old. मतलब so you imagine, and आप सोचो ना कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. लाइक अपन तो अर्बन चीज़ों में बोलते हैं ना कि यार इतना डिफिकल्ट है, बट इवन रूरल स्पेसेस इट हैज़ percolated so much in all parts of the country that this has now become a ubiquitous problem. गांव का Okay. बच्चा है, शहर का बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सभी Everyone is उतने getting अडिक्टेड affected. हैं, वो सभी उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं. And so you spoke about what is the right time, and how this is affecting the kids. So we already discussed about how it is affecting the kids, but also when it comes to how much should I allow my child to be in front of a screen. All the recent data that is coming says that childhood autism is now very directly correlated with screen time use. So if your children under the age of 5 are spending excessive amounts of time looking at things, right, it is changing a lot, when they are developing and growing older. Because the subconscious तो mind is getting एग्जैक्टली programmed in एंड a different हाँ way. एग्जैक्टली एंड उनके बिहेवियर भी वैसे ही हो रहे हैं. सोशल आइसोलेशन बहुत हो रहा है, तो उस वजह से ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वैसे Okay. ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो रिकमेंडेशन सेज दैट अंडर द एज ऑफ 5 a child should ideally have no to negligible screen time. That is And becoming impossible now. that's the thing. So आप मतलब, and modulating it is very difficult. I mean, we all have kids around us. आपके परिवारों में हैं, खुद के लोगों के बच्चे हैं, और सब बेचारे उसी स्ट्रगल में हैं. लाइक आई सेड, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो होता ही है. बट द आइडिया इज कि आप जितना हो सके उतना कम करें. मतलब अगर दिन में लेस देन हाफ एन आवर इज द आइडियल थिंग, right? That is how much it should be, and also it should not be associated with reward. So for example, कि खाना खिलाना है तो स्क्रीन लगा दी, ये बहुत गलत है. क्योंकि फिर क्या है, बच्चे की जिद भी वैसे ही डेवलप होती है कि अब तो वो खाना खाने में टाइम लगा रहा है, वो ज्यादा खाना खा रहा है, और समझ क्योंकि स्क्रीन दिखने को मिल रही है. सोने के टाइम पे स्क्रीन दे दी फॉर एग्जाम्पल, या ऐसा कुछ. तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए. स्क्रीन टाइम शुड बी स्क्रीन टाइम unrelated to any activity. You just have a dedicated Exactly, screen time exactly. and then And switch it off after this is that. all That's you it. get. This is all you get. And that too above the age of 5, I would say. Below the age of 5, तो ये सब भी मतलब कोशिश करके नहीं होना चाहिए. So that is, and also children look at their parents, right? I mean, you can't be on a phone the whole day and expect a child to not want it, right? That is absolutely wrong. Because they look So at you exactly. and So you have to change the way you are around them as well. And it's difficult because technology has become very integral. चलो आप फोन नहीं देख रहे हो लेकिन आप अपनी वॉच पे कुछ कर रहे चीजें हो. देख रहे हो, राइट? सो वो डिफिकल्ट है डेफिनेटली, बट आई थिंक इन अ वेरी balanced and a very mindful household. Mindful is an important word, कि आपको पता है कि चीजें कैसे अफेक्ट होती हैं. तो अगर आप उन चीजों को जहन में रखते हुए प्लान करते हो, बच्चों को बड़ा कर रहे हो, तो आई थिंक that is better. Yeah. So with this I want to know, like, what are some of the things that people should completely avoid and look out for in the kind of content the kids are watching? Because the
kids are exposed to unconditional, the amount of screen that they're exposed to is like infinite. They can just keep tapping and go to something else. Correct. And even the cartoons and the kids videos that they're called, they are, where I have seen, they're promoting a lot of consumerism Yeah, and yeah, yeah. makeup and Definitely. well-being and getting Definitely. followers and subscribers. I mean, this was something that we knew after a much later Yeah, year, yeah, and my 6-year-old is saying, I want subscribers, I want followers. yeah, So yeah. what are the things that can be alarming, and the parents need to watch out in the screen that they're watching, the videos that they're So watching? I feel that a lot of um, content that is made from the right production houses Okay. always have, correct certifications कि Okay. भाई this content is for 6 and below, 6 and above, 8 10 ऐसे करके वो सब एज बैंड्स दिए होते रहते हैं. हैं. आप YouTube पे देखें या आप Netflix पे देखें फॉर एग्जांपल, तो यू विल गेट दैट क्राइटेरिया. सो आई थिंक वो पेरेंटल लॉक होना बहुत ज़रूरी है ऑन डिवाइसेस एंड कंटेंट. तो उसकी मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल कि आपके इफ चाइल्ड इज गोइंग ऑन अ प्ले डेट फॉर एग्जांपल, राइट, सो उनके वहाँ पे भी वो चीज़ फॉलो होती है कि नहीं होती, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस इट. आई थिंक एवरी पेरेंट इज कंसर्न, राइट, सो you say it and that just keeps a check, and the child also knows that I am being monitored by elders, तो वो थोड़ा एक वो रहता है. सो एंड लाइक यू मेंशनड, अब देखिए वो कंज्यूमरिज्म और जो एक वो वैलिडेशन वाली चीज़ है मीडिया में, कंटेंट में, वो तो आ ही गई है, और वो कैपिटलिज्म का बहुत सीधा सीधा पैमान है, बट उसको बदला नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली. बट आई थिंक योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट एंड your child's perspective about it can be shaped by the parent very well. Okay. Right, so if you don't respond, to things in a certain way, then the child won't also, do So the even same if they thing. are So exposed to, you exactly, have the still have the control exactly, of very molding very how small things. cues can really help. Okay. Like अगर जैसे बच्चा कह रहा है कि अरे इतने सारे व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे फॉर एग्जांपल, तो आप रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, आप उनको वैलिडेशन उन्हें कहाँ से मिल रहा है, डू, मतलब उसमें ये होना चाहिए मोर कि भाई आई सी यू एंड आई अप्रिशिएट यू. इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन एल्स does that as well, and in person appreciation is always acceptable rather than other things. तो ऐसे पहले नहीं होता था कि छोटे बच्चे होते थे तो मम्मियाँ बोलती थी अरे पोयम सुनाओ, अरे डांस करके दिखाओ, तो बच्चा 10 लोग में कर रहा है और सब तालियां बजा रहे हैं. वर्सेस अब क्या है, वो वीडियो लेती हैं, वो वीडियो 10 जगह भेजती हैं, तो वो वीडियो पे फिर वो कहती हैं कि अरे देखो इन्होंने तुम्हारा वीडियो देखा. तो वही तो आपको नहीं करना है. अगर आप भी वही चीज करोगे तो बच्चा ऑब्वियसली फॉलो करेगा, राइट. सो या, सो these small things I feel, and like I said, it's just about being mindful. I think every elder knows what is best for their child, more or less. It is just that you don't have to give in to your ways. You don't think like an adult, right? You just have to maintain that boundary when it comes to kids as well, कि आप अपने तौर तरीके उन पे इम्पोज ना कर दो गलती से, राइट. तो वो कुछ टाइम की बात है. once they are grown, then things get easy. Yeah. With this, another question relating to kids is, we see a lot of bullying happening nowadays, and the cases are increasing with every passing day. So I want to understand what goes behind in the minds of a person who's bullying, a kid who's bullying, and how to handle a kid who's being bullied, how to identify, because a lot of time the kid who's being bullied might not be able to express. When they're small, it becomes even more difficult. So let's talk about the first part, ki what goes in the mind of a person who is bullying someone, right? See, there are a lot of factors that influence such kind of behavior, right? First and foremost, it is the circumstances of the child, what kind of household they live in, and what is the usual behavior in that household, right? It is very commonly seen that children coming from families that have a lot of fighting, right, a lot of dominating people, being present, or a lot of violence,
फॉर एग्जांपल, राइट, सब्सटेंस यूज इन द पेरेंट्स, अल्कोहल है या ऐसा कुछ है, तो these children can sometimes develop a tendency to exert the same kind of violence and aggression in the people Because what around they're them. getting absorbing, Exactly, they're just exactly. taking So, that. so मतलब बहुत बार ये होता है कि a child that is being, uh, physically assaulted or whatever, maltreated in their house would come and do the same thing to other Yeah. people, because for them this is the only way of, Expressing expressing, themselves. not just expressing but also conveying, communicating, right? कि माँ बाप मार के बात समझा रहे हैं तो ये भी दोस्तों को मार के Because बात that समझा is रहा है, normal because for that is them. normal for them and that is a way of things that, that happen. So एक तो ये चीजें होती हैं कि आपका हाउस होल्ड का क्या है. Some children have certain disorders that are common in Okay. childhood that can predispose to bullying a lot. So Okay. like for example, conduct disorder, oppositional defiant disorder, right? ADHD. So And all these need attention yes, all these, and I mean, help. they present in different ways, right? So these are behavioral manifestations of an underlying mental health illness, Okay. right? So that can predispose to that bullying attitude that you Mm-hmm. have. So these are how, these things develop, I would say. And then moving on to the second part, how do you recognize if somebody is being bullied? So usually there are certain soft signs to look out for. So सबसे ज़्यादा तो a change in baseline behavior, right? कि एक जो बच्चे का नेचर है, उसका स्वभाव है, वो बदल रहा है, राइट? एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रही है, बात करने का ढंग बदल रहा है, बहुत क्वाइट हो गया है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, फॉर एग्जांपल, राइट? चिड़चिड़ापन होना, रोना सडनली, राइट? तो ये सब चीज़ें इनिशियली आती ही आती हैं. घर का एटमॉस्फेयर शुड यूजुअली be a very open atmosphere. So if you encourage talking in the family a lot, and if you encourage questions like, oh, how was your day and how did that make you feel, the moment you add the second part, na, how do you feel about it, that encourages children to express their emotions well. So a lot of times you sometimes see, mothers be like, oh, I'm so happy, are you happy? And the child will be like, I'm happy just because the mother is saying, Mother is happy. I'm happy, right? But a better way of doing it is, I'm so happy. How does that make you feel? Okay. So the child learns how to express. Hmm. And यही चीज इस सिनेरियो में बहुत हेल्प करती है कि if you teach children from a younger age on how to express themselves, and then maybe when they are exposed to such difficult scenarios, it is easier for them to open up. Okay. राइट? बिकॉज अब होता है ना, थोड़े देखिए रोल्स अलग होते हैं, जैसे मेल डोमिनेंट रोल्स जो होते हैं कि अरे स्ट्रांग रहना है, रोना नहीं है, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी समझते हैं. कल्चरल बहुत इन्फ्लुएंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये बहुत सही भी नहीं है, बट ठीक है, इट्स बिन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दीज थिंग्स ऑल्सो डेवलप चिल्ड्रंस पर्सनैलिटीज एज दे ग्रो अप. सो कहीं ना कहीं दे हेल्प एज वेल. So, but again, वही है ना कि there's a very fine line between, um, you know, accepting what is happening versus accepting something that is wrong. So the child should know when to speak up when something is wrong. So that can only happen when you encourage that conversation in the house. I think the two most vulnerable section that I would say would be, one would be kids and the other would be the elderlies. Yeah. So can you talk a little more about the mental health and the elderlies in the family? So when you talk about older adults, that is anyone above the age of 65. Okay, so this is pertinent to that demographic. Because of the recent change in living trends in the country, you now have more people who are living by themselves, especially the elderly population. We have a working class demographic, and people get retired and they suddenly have nothing to do, right? Or they, a partner passes away, and then there's a gap. Exactly, There's a huge, exactly. So there's that there. void in their lives, and और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, physical health issues हैं, with age your cognition declines, your memory declines,
physically you can get affected by multiple illnesses and things like that. So it is already a very fragile period. एंड देन ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आती ही आती है, which is why elderly people face a lot of mental health issues, right? Which go very, very unnoticed because they don't have the capacity to seek help a lot of the times. And even if they do, or say if they live in a household, like I said ना, कि बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे दादी तो सठिया गई है, राइट? है डिमेंशिया, ट्रीटमेंट है, या डिप्रेशन है जिसका ट्रीटमेंट है, बट दादी तो सठिया गई है, तो अपन हंस के उन चीज़ों को बुला देते हैं या छोड़ देते हैं, whatever, which I feel very, bad about, because why should they not deserve, the same kind of care that younger people get, and they've nurtured you and made you what you are. So I feel, you owe it to So them those to, dementia and everything, that is not normal. I mean, so that, yeah, so, no, please finish your question first. Yeah, that's what. So that is not normal. That is something that people have accepted as normal, and they would just go with it. But that's not the right approach to do. I would say that, look, memory impairment is something that happens to everyone as they grow older, because your brain also ages, right? Your nerves also age. So थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी आनी ही है, जरूरत से ज्यादा, और वो इतनी ज्यादा है कि उससे डिसफंक्शन हो रहा है, लाइक आई मेंशन ना, कि आपकी लाइफ के डोमेन्स अफेक्ट हो रहे हैं, तब वो डिमेंशिया कहलाता है. ओके. डिमेंशिया इज नॉट जस्ट चीजें भूल जाना, राइट? इट इज अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ, impairment in attention, awareness, memory, cognition. So it's a full syndrome, right? एंड उसके बहुत सारे पहलू हैं जो जब आप असेस कराने जाते हैं तो आपको समझ में आते हैं, डॉक्टर समझाता है. एंड ट्रीटमेंट से डिमेंशिया रिवर्स नहीं हो सकता, राइट? इट इज वेरी मच लाइक लूजिंग अ फिंगर. अगर आपकी उंगली कट गई तो नई उंगली तो नहीं आ सकती. सिमिलरली ब्रेन का कोई हिस्सा अगर कमजोर हो गया है, नष्ट हो गया है बिकॉज ऑफ एज, वो वापस नहीं आ सकता. बट उस प्रोसेस को बहुत स्लो किया जा सकता है. So when you get the right treatment for dementia, you are basically slowing down the worsening. मतलब अब से ट्रीटमेंट चालू होने से अगर जो चीज मान लीजिए 5 साल में खराब होनी थी, वो दवाई की सहायता से 15 साल में खराब होगी. आप समझ रहे हो? सो इट इज वेरी मच लाइक आर्थराइटिस, टू से कि इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो डीजेनरेशन इन द जॉइंट टेक्स लॉन्गर. सेम थिंग वर्क्स हियर एज वेल. So that is what I mean when I say treatment for dementia. So clarity of thought बढ़ जाती है, प्रोसेस धीरे हो जाती है, और कई बार पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट भी काफी आता है. बिकॉज़ वो क्लियर हेडेडनेस आ जाती है. So yeah. Can you give us some tools that the elderly can, to empower the elderly to maintain their mental health? Yeah. Considering the fact that we are moving towards nuclear families, we are almost there. People are very busy; they don't have time for themselves. So taking care of the elderly is itself a challenging task for them. So how can we empower them? What are the tools? What are the things that they need to incorporate? So देखिए, जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो हर डॉक्टर बोलता है कि आपकी डाइट सही होनी चाहिए, आपका कुछ एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, एंड आपकी नींद, आपकी जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, ये एल्डरली पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब फॉर ऑल माय पेशेंट्स, माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन इज दिन में नहीं सोना है, सिर्फ रात को सोइए. ओके. राइट? बिकॉज उससे क्या, देखिए, एज यू ग्रो ओल्डर योर स्लीप टाइम रिड्यूसेस, राइट? यू ऑलवेज सी कि भाई बड़े घर के बड़े इतनी जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, वो पूजा करने नहीं उठते, उनको नींद ही नहीं आती है उसके बाद, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं करने के लिए, राइट? सो इसलिए अब स्लीप टाइम कम है, लेकिन क्या हो रहा है, बॉडी का प्रोसेस ऐसा है, फिजियोलॉजी ऐसी है कि रात की नींद सबसे बेनिफिशियल नींद होती है. Because that's the time when your body is repairing everything. Exactly. Many things happen. So for that subset of people, nighttime sleep is most important. Daytime sleep is not very important. Right? So if you can skip it, you should just skip it.
So that sleep cycle maintenance is I think most important thing. Number two, the diet, physical exercise is very important. Number three, being engaged in some type of social or community activity, right? आपको जिस चीज में शौक है आप वो करिए, और जिसमें आपको लोगों से एक्सपोजर हो रहा है, जिसमें आप किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने मोहल्ले के या लोकेलिटी के किसी एक ग्रुप का पार्ट हो, तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज You कर have रहे हो, some purpose or a goal एग्जैक्टली to आप एक डोनेशन achieve. ड्राइव कर रहे हो, आप रिलीजियस बहुत हो तो आप एक मंदिर की या गुरुद्वारे के मॉस्क के उसमें आप एक पार्ट में हो जो आप उनके इवेंट्स का थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हो. इट कैन बी एनीथिंग. आपको गार्डनिंग का शौक है तो भाई आप गार्डनिंग कर रहे हो, बट देर इज एन एक्टिविटी दैट इज कीपिंग यू मोटिवेटेड, दैट हैज सम गोल रिलेटेड टू इट, जो दिखे कि मैंने इस पौधे का ध्यान रखा है, अब इसमें फूल आया है, राइट? तो वो एफर्ट आपको दिखता है, वो फीडबैक मिलता है, विच इज वेरी ग्रेटिफाइंग. सो आई थिंक इन ओल्डर पीपल दैट एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर वो नहीं रहता तो देन दे स्टार्ट फीलिंग आइसोलेटेड, they feel they're not being looked after, and so on and so forth. So that managing that feeling, that isolation should be done by different ways. So, what are the tools that the young aged people and the middle aged people can use in their lives to maintain their mental health and to keep a check on it? So apart from the usual things related to sleep, appetite, and exercising, what I highly recommend is a reflection. So you reflect on moments in your life, moments in your day, even, and see how they make you feel, see how it influences your behavior. And reflection works best if it's done in writing. Journaling. Journaling, exactly. So कि ये हुआ, मुझे उससे ऐसा लगा, मैंने ऐसे रिएक्ट किया, क्या कुछ और कर सकते थे, नहीं कर सकते थे. I mean, this sounds like a very tedious exercise when I say it, but even if you do it few times in a week, that really helps. And another thing that also works is taking out time for yourself. So अभी क्या है, लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैक्सिमम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जीते हैं, राइट? आप अपने पार्टनर, बच्चे, पेरेंट्स, पेट्स, पता है आप उन्हीं के लिए सब कर रहे हो, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो. सो अनदर एडवाइस दैट आई लाइक टू गिव पीपल इज टू बी सेल्फिश, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. if you can invest some time in yourself, do what you like best. कुछ नहीं करना पसंद है तो कुछ मत करिए, बैठ जाइए, अकेले हैं, चिल कर रहे हैं, जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, बट you're taking out this time for your mental benefit, right? So that I feel really really changes things. And the third thing that I would recommend is to share and talk to people, right? Oftentimes you are very very apprehensive and embarrassed about sharing things that are affecting, right? And क्योंकि नहीं हो पाता ना, आप एक नए शहर में एक नई कंपनी में अपने कलीग्स के साथ कितना ही पर्सनल चीजें शेयर कर लोगे, बट I don't want to say that you tell everyone everything, but with people who you think you can relate to, who you can confide in, right? And who you feel are the same frequency or wavelength as you are, right? उनसे चीजें बात करना, उनको अपनी डिफिकल्टीज बताना, थोड़ा उनसे फीडबैक लेना, ये बहुत हेल्प करता है. तो ये चीजें जरूर करनी चाहिए, एंड इसको एक आदत सा बना लेना चाहिए. So this should be a part of your life. Exactly. So this is all positive mental well-being. So Okay. yeah. And what are the things that they should absolutely not do to maintain it? I don't think कि there ऐसे absolute contraindications कुछ होते हैं, because हर चीज बहुत relative है, right? I mean, I can say that अरे आप drink मत करिए or whatever, but social drinking occasionally within the permissible limits is, I mean, that's fine, and that's been in our tradition, in our culture for a long time. So obviously doing everything in excess is bad, right? So सही मेजर में, सही समय पर, सही तरीके से कुछ करें तो वो
usually harm नहीं I पहुंचाता. think this boils down to the fact that we need to stay connected with our tradition and roots. Exactly. And obviously, try and be, more humane in the way you are. Think of people around you. Think of the nature around you. Be benevolent more than being always oriented towards material things or things like that. So that brings a different level of peace. That can help. Thank you so much, Rishi, for your time. This was our Sacred Discourse with Rishi Malik on mental health. Hope you liked the episode and you have enough insight to understand the topic better and to help yourself better. Do let us know how did you like the episode and do share your feedbacks and comments. Subscribe and follow to the channel to have more such insightful conversations with experts to bring out what really life is all about.